All right, I think we will begin now. I'm sharing the screen. You please tell me if the screen is visible or not. Okay. So, students, yesterday we have already started with principles of TQM and we have discussed few points like ethics, integrity, and trust. First Trust. 3 points हो गया था, है ना? Yes, First three ma'am. points. Okay, all right. So let us continue with the answer and let us discuss point number 4, which is training. Okay, who is going to read that? Manoj, beta Yes, read ma'am. kar lo na. Yes, हाँ, ma'am. okay. Ma'am, what is the page number? Yeah, it is 101 and I have also shared the screen. Okay, ma'am. Student screen is visible, no? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, all right. Training. Training is required for the employees in order to perform their work efficiently. With the help of training, supervisor teach their employees the philosophies of total quality management. Training can be of two types: functional, technical, and soft skill, communication, interpersonal, decision making, etc. Training is a mode of communicating the requirement of total quality management to the employees. Okay, now you are planning to implement total quality management, which I said you in the beginning also is a very philosophical concept. It is extremely challenging and difficult to, bring total quality in your work practices. All right. And therefore, आपको कुछ principles follow करने हैं. Yesterday we started with point number 1, which is ethics. Do always right so that you can bring total quality. Integrity, which means honesty, truth, reliability. Just a minute, there are a few students in the waiting room. Okay. Sincerity, loyalty. Okay. If all these factors are there, if integrity is there, definitely you can bring total quality management. Then we have also seen the next point, which was trust. Okay. So the outcome of ethics and integrity will be trust. Okay. If there is a trust factor between the employer and the employee and with the customers, automatically the company will be in a position to bring total quality management. Then just now we have completed point number 4, which is training. Now listen to this student very carefully. I think training is very, very, very important to your employees. It polishes their skills and upgrade their knowledge. Lekin for total quality management, okay, you have to give them training in understanding the idea of total quality management. Okay, ये जो philosophy है ना, ये समझाने के लिए आपको training conduct करना होगा. Then your textbook is further saying that there are two categories of training. Okay, the first one will be functional, where you are going to teach your employees a technical part, okay, of how to do the job to bring quality. The second one be second training would be on soft skills like communication, interpersonal, decision making. Okay, all these are soft skill trainings. So through the training mode you can bring the necessary requirements of TQM in the employees. Okay, to bring total quality you need to have quality employees, है ना. आप quality लाने की बात कर रहे हो तो जो लाने वाले हैं quality उनके अंदर भी तो quality होना चाहिए ना. And training can help to bring that quality. So training is the next point or next principle of TQM. Any difficulty over here? No, ma'am. Ma'am. Okay. We move on to the next one, which is teamwork. The students are joining so late. Yeah, what is this? Okay. All right, Manoj. Teamwork. To become successful in business, teamwork is also a key of element of total quality management. With the use of teams, the business will receive quicker and better solution to problems. Teams also provide more permanent improvements in process and operations. In teams, people feel more comfortable bringing up problems that may occur and can get help from other workers to find a solution and put into place. I think nothing works better than a teamwork because if you have employees who are working in team,
okay, your outcome will be of quality. And why quality? Because टीम में बहुत सारे members है ना, and बहुत सारे members सारे एंगल से सोचने के बाद में solutions देते हैं, right? So I think your teamwork will give you long term success. क्या अगर आपको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट चाहिए तो डेफिनेटली आपको आपके एम्प्लॉयज को एनकरेज करना होगा to have teamwork in their working practice. I think this is how the company will run. Okay, this is how the company will reap the benefits of teamwork. This is how the company can get total quality management. Guys, I'm really fed up. ये देखो एक एक करके ज्वाइन करते हैं. 8:50 का लेक्चर है ना. What is this? Okay. Also, your textbook is saying if you want to be successful in business, you have to remember one thing, that teamwork will play a major role. Okay. And then how teamwork, students? There should be good coordination amongst members. Na thoda informal groups hona chahiye company mein. People should be friendly, should be cooperative in nature, right? As a employer, you should also encourage friendly relations in the company. Friendly yani ki they should be cooperative to each other. Okay, that's how you will be able to get the teamwork. आपने वो स्टोरी सुना था क्या? द ये turtle and the rabbit and the hare and tortoise. आपने वो स्टोरी सुना था, द हेयर एंड टॉर्टॉइस? Yes, ma'am. हाँ, उसमें आपको पता है वो स्टोरी का पूरा, इफ यू कैन रिकलेक्ट, रेस डिसाइड करते हैं हेयर एंड टॉर्टॉइस दोनों जन. एंड नेचुरली हेयर का जो स्पीड है वो ज्यादा है एंड टॉर्टॉइस का स्पीड जो है वो कम है. तो जो हेयर होता है वो सोचता है कि ओ माई स्पीड इज गुड, तो अभी मैं तो आराम करता हूँ फिनिशिंग पॉइंट के पहले. एंड टॉर्टॉइस तो धीरे धीरे आएंगे ना, तब तक मैं फटाफट से क्रॉस कर लूंगा एंड आई विल विन द रेस. ओके, तो दैट्स हाउ डे वन दोनों डिसाइड करते हैं, दोनों रेसिंग करते हैं. ऑब्वियसली हेयर इज विनिंग. सेकेंड डे अगेन द हेयर इज विनिंग. थर्ड डे अगेन द हेयर इज विनिंग. अब टॉर्टोइस को लगता है यार इसको हराया कैसे जाए, ये गेम में स्पीड ही सबसे ज्यादा मैटर करता है, और जो कि मेरे पास नहीं है. जो स्किल सेट टॉर्टोइस के पास इसके हेयर के पास में है और मेरे पास नहीं है, तो डेफिनेटली यही रेस विन करेगा. तो इसको कैसे हराया जाए? तो टॉर्टोइस क्या बोलता है, चलो हम लोग थोड़ा रेस को ना थोड़ा डिफिकल्ट बना देते हैं. एंड हेयर बोलता है ठीक है, क्या करेंगे आप डिफिकल्टी लेवल बढ़ाकर, वैसे भी मैं ही जीतूंगा, मेरी स्पीड ज्यादा है. तो टॉर्टोइस बोलता है ठीक है ना, इफ यू आर रेडी देन लेट अस ब्रिंग द डिफिकल्टी लेवल. सो हेयर बोलता है ओके. और फिर टॉर्टोइस बोलता है टाइमर बेस्ड रखेंगे कि कितने टाइम में. तो हेयर को और हंसी आ जाती है, अरे मैं ही जीतने वाला हूँ क्या ये, बिकॉज ही इज कॉन्फिडेंट नो कि मेरा वो स्किल है, मैं वो फास्ट भाग कर जीतने ही वाला हूँ एनी हाउ. ओके, सो टॉर्टोइस क्या करता है, जो ओवर फिनिशिंग, सॉरी ओवर कोई कुछ कॉन्फिडेंट बोल, मैम, हाँ ओवर कॉन्फिडेंट मैम. हाँ ओवर कॉन्फिडेंट, करेक्ट, ओवर कॉन्फिडेंट. अभी टॉर्टोइस क्या करता है, रेस फिनिशिंग लाइन है ना जो, उसको थोड़ा आगे बढ़ा देता है. ओके, और बीच में ना वो एक नदी आ जाती है. ओके, एंड फिर फिनिशिंग पॉइंट उस नदी के उस पार है. ओके, अब हेयर दौड़ते दौड़ते फिनिश नदी तक तो पहुंच गया, लेकिन अब उसको तैरने तो आता नहीं है. ओके, तो वो खड़ा है, वो सोच रहा है मैं क्या करूं अभी. ओके, ये एंड टॉर्टोइस स्लोली 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 आकर, टॉर्टोइस कैन आल्सो स्विम. टॉर्टोइस फिर स्विम करता है, उस नदी को पार कर देता है, फिर फिनिशिंग लाइन क्रॉस करता है एंड ही विंस द रेस. अच्छा, अभी ये हेयर का ईगो खराब हो गया, बिकॉज ये टॉर्टोइस ने क्या कर दिया, डिफिकल्टी लेवल बढ़ाकर रेस विन कर दिया. ओके, एंड देन दिस पॉइंट ऑफ टाइम टर्टल इज वेरी हैप्पी कि देखो ये मेरे को मेरा स्किल्स काम आया. आई कैन मैं ग्राउंड पे वॉक भी कर सकता हूँ और पानी में स्विम भी कर सकता हूँ. तो अभी मेरा ये कंबाइंड स्किल्स मुझे काम आया एंड मैंने ये रेस विन कर लिया. सो हेयर को थोड़ा हर्ट हुआ, हेयर का ईगो भी थोड़ा हर्ट हुआ कि इसने कैसे मतलब डिफिकल्टी लेवल बढ़ाकर अपना रेस विन कर लिया. फिर दोनों जन है ना फ्रेंड्स बन जाते हैं. ओके कि ओके लेट अस नाउ
become friends, and because now hair is showing respect ना, winner को respect तो दिखाना पड़ेगा. सो देन व्हाट हैपेंस इज, फिर टॉर्टोइस बोलता है वो सेम रेस को ना जो मैंने इतने टाइम, बिकॉज मैं धीरे धीरे आया, फिर पानी में स्विम किया, फिर क्रॉसिंग लाइन, फिर वो फिनिशिंग लाइन क्रॉस किया, तो बहुत टाइम लग गया. अगर हम दोनों इकट्ठे मिलकर ये रेस करेंगे ना तो हम और भी जल्दी जीतेंगे. तो हेयर बोलता है ये कैसे हो सकता है. तो टॉर्टोइस बोलता है एक काम करो, जब आप दौड़ रहे हो तो अपने पीठ पर मुझे ले लो. ओके, वी रन एंड देन यू रन. फिर जब पानी वाला पार्ट आएगा ना तो मैं अपने पीठ पे आपको ले लूंगा, आई विल टेक यू ऑन माई बैक. ओके, और फिर जब वो नदी क्रॉस हो जाएगी फिर से आप मुझे अपने बैक पे ले लेना, एंड देन हम फिनिशिंग लाइन को बहुत जल्दी क्रॉस कर लेंगे. अभी ये रेस करने में जो उनको मजा आई ना, बिकॉज दे वर नॉट कम्पीटिंग विथ ईच अदर, कि नाउ दे वर कम्पीटिंग विथ द टाइम फैक्टर, कि अभी हमने कितने कम टाइम में ये रेस विन किया. ऑफ कोर्स क्योंकि हेयर की स्पीड ज्यादा थी तो वो टर्टल को अपने पीठ पे रखकर दौड़ दौड़ के फटाफट आगे बढ़ गए. फिर जैसे ही वो नदी आई वैसे टर्टल ने हेयर को अपने पीठ पे रखा और क्रॉस किया वो नदी, एंड देन अगेन हेयर ने टर्टल को पीठ पे रखा और क्रॉस किया वो फिनिशिंग लाइन. तो इन लोगों ने बहुत कम टाइम में वो रेस को कंप्लीट किया. नाउ बोथ आर वेरी हैप्पी. ओके, अभी तो हेयर फिलहाल टर्टल को रिस्पेक्ट कर रहा था. नाउ दे बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स. ओके, ये आपको पता है ये कॉन्सेप्ट क्या है, दिस इज टीम वर्क. ओके, दोनों के स्किल सेट्स अलग अलग थे. ओके, लेकिन जब दोनों ने अपने स्किल सेट्स को कंबाइन किया, टीम वर्क में काम किया, तो रिजल्ट तो कुछ और ही आया ना, और भी अमेजिंग, कम टाइम में रेस विन किया. नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क. Yes, ma'am. है ना. तो Yes, इकट्ठे अगर ma'am. एम्प्लॉय, यस ओके, अगर एम्प्लॉयज इकट्ठे काम करेंगे, ओके, एक दूसरे के स्किल सेट को कंबाइन करेंगे, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा क्वालिटी मिलेगा. एंड दैट इज हाउ इवन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज प्रोपगेटिंग द आइडिया कि अगर आपको टोटल क्वालिटी चाहिए यू शुड ऑलवेज एनकरेज टीम वर्क. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड व्हिच इज लीडरशिप. Yes, ma'am. Leadership. It is one of the important element in total quality management. Leadership in total quality management requires the manager to provide an inspiring vision, make strategy direction that are understood by all, and to instill values that guide subcoordinates. For TQM to be successful in business, the supervisor must be committed in lending his employees. A supervisor must understand total quality management, believes in it, and then demonstrate their belief and commitment through their daily practices of total quality management. A key point is that total quality management has to be introduced and led by top management. Commitment and personal involvement is required from top management in creating clear quality values and goals consistent with the objectives of the company. Okay, now leadership is something which I think goes long way. अगर आपको quality working चाहिए तो सबसे पहले एक leader अच्छा होना चाहिए. Okay, and leader is someone who is going to take everyone ahead. Okay, एक unbiased, एक leader के अंदर quality होना चाहिए कि वो सबको same treat करे. Authoritative leaders अभी काम नहीं आएंगे. बड़े बड़े companies में you need a leader who is not authoritative, कि जो पावर नहीं दिखा रहे हैं, जो सबके साथ बैठ के काम कर रहे हैं. उनके ऐसे होने चाहिए लीडर्स. लीडर शुड बी वन वन अमंगस्ट ऑल. ऐसा नहीं कि लीडर है मतलब उसका सेपरेट ट्रीटमेंट या स्पेशल ट्रीटमेंट. नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट. Okay, a good leader will always be someone who is going to inspire, who is having an inspiring vision, जो आपको है ना विजन में बिलीव करने में मदद करे. बिकॉज समटाइम्स इट हैपेंस, एम्प्लॉयज को लगेगा कि कंपनी बहुत अनरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स रख रही है, बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स देख रही है. लेकिन ये चीज को बिलीव करने के लिए अगर एक लीडर होगा तो यस यू विल बी बिलीविंग दोज ड्रीम्स, यू विल बी बिलीविंग दोज विजन्स. ओके, अ गुड लीडर विल ऑलवेज प्रोवाइड डायरेक्शंस टू द एम्प्लॉय.
It's very important that the employee gets a clear direction. आपको पता है many a times employee leave the job not because of work schedule or not because of targets. वो तो उनको मालूम है ना कि कंपनी में आए हैं तो काम करना ही है. They are well prepared for that. वो जॉब क्यों छोड़ते हैं मालूम है? क्योंकि उनको कंफ्यूजन है वर्क प्लेस में कि काम कैसे करना है. ओके अगर वो काम करने आए हैं तो दे ऑलरेडी नो कि भाई हमें काम करना है. All right, and they will not leave the job because they are made to work more. They leave the job because they are confused. There is a lack of direction. मालूम ही नहीं है कि काम कैसे करना है. Okay, it confuses talented people and they might leave the job. Okay, so very important is good leaders should always provide directions. Okay, and this is how you will get commitment from the employees and you will be in a position to bring total quality management. एक राइट लीडर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. एक राइट लीडर हमेशा अपने एम्प्लॉयज को बिलीव कराएंगे दैट the company has certain vision and we are moving towards that vision. So a good leader will bring that, and hence to bring total quality management you need some good leader. Moving on to point number 7, which is communication. I hope there is no difficulty in the previous points. हमेशा आपको लाइफ में भी कभी भी टीम वर्क याद रखना होगा. सो रिमेम्बर ये वाला हेयर एंड टॉर्टॉइस वाला रेस. ओके याद रखना कि कैसे दोनों के स्किल्स अलग थे, कैसे उन्होंने कंबाइन करके वो रेस टुगेदर विन किया. ओके एंड देन वी हैव जस्ट नाउ डिस्कस लीडर. एक अच्छा लीडर हमेशा क्वालिटी लाने में मदद करेंगे. मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 7, which is communication. Okay. Yes, ma'am. Communication, it binds everything together. It acts as the vital link between all elements of total quality management. Communication means a common understanding of ideas between the sender and the receiver. The success of total quality management demands communication with and among all the organization members, supplier and customers. Supervisors must keep open airways where employees can send and receive information about the total quality management process. Communication coupled with the sharing of correct information is vital. Communication can be upward as well downward. Okay, I think before even explaining you this, you already know that when you work in a company, you should talk to each other. The more the communication, the better the clarity, right? Whether it be an upward communication or whether be it a downward communication. I don't know, I heard this somewhere कि बड़े बड़े वॉर्स को है ना आप वेपन्स के जरिए नहीं जीत सकते हो. ओके आई डोंट थिंक सो. दो कंट्री के बीच में अगर डिस्प्यूट है तो एक दूसरे के ऊपर बॉम्ब फोड़ना जरूरी है. ओके यू ऑल कैन सिट कम्युनिकेट एंड फाइंड आउट अ सोल्यूशन, राइट. सो अगर बड़े बड़े देशों के बीच के डिस्प्यूट सिर्फ कम्युनिकेशन से सॉल्व हो सकता है. So you can imagine how important communication is within the company. Supervisors, employees, suppliers, customers should regularly communicate. अगर कस्टमर कम्युनिकेट करेंगे तो ही तो फीडबैक मिलेगा ना. एंड बेस्ड ऑन दैट फीडबैक आप इम्प्रोवाइज कर पाएंगे, राइट. सप्लायर कम्युनिकेट करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर कम्युनिकेट करना चाहिए, एम्प्लॉयज कम्युनिकेट करना चाहिए, बॉस कम्युनिकेट करना. हर किसी के कम्युनिकेशन की बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है. Okay, there are a lot of communication which is happening within the company. I think the company can bring total quality management. Okay, because to bring total quality, I think involvement of people through communication only you can involve people, right? That will happen, and that's how you will be in a position to bring total quality management. That is what you are studying, the principles of TQM. Okay, so communication is one amongst the very important principle where people are talking. The more you talk, the more you get involved. And also students, communication somewhere develops a bond. अगर आप ये चीज बिलीव करते हो, अगर आप रेगुलरली बात करोगे तो आपके अंदर एक बॉन्ड क्रिएट होता है ना आपस में. और अगर आप वंस इन अ वाइल बात करोगे तो थोड़ी ना वो बॉन्ड क्रिएट होगा. So to have that strong bond and connection, again, communication is very, very vital. Moving on to point number 8, which is recognition. All right, Manoj. Recognition. Recognition is the last and final element in the entire system. It should be provided for both suggestion and achievements.
for teams as well as individuals. Employees strive they receive recognition for themselves and their teams. Recognizing contributors is the most important job of the supervisor. As people are recognized, there can be huge change in self-esteem, productivity, quality, and the amount of effort given to the task. I think extremely important. Although textbook is only mentioning recognition, but I feel rewards also should be included. What is recognition, students? Recognition means जब आप कुछ काम में contribute करते हो और उसकी वजह से output अच्छा आता है, you deserve acknowledgement, right? You want to be recognized. You want to be like appreciated in front of everyone. I think human in nature. आपके जब आइडियाज बेस्ट होते हैं एंड इफ इट हिट्स द टारगेट एंड आपका आइडिया अच्छा आउटकम दे रहा है, तो यू वांट ना दैट योर बॉस शुड अप्रिशिएट यू इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, शुड रिकॉग्नाइज यू, शुड एक्नॉलेज your efforts. I think every employee will continue contributing as long as they are being recognized. Okay, and if you do not recognize them, can if I'm working somewhere and my work is not recognized, एक point ऐसा आएगा when I'll stop giving my quality inputs, okay, because my boss is not recognizing me. Okay, so I think recognition is extremely important. Okay, this will help to bring total quality management. Although textbook is not mentioning, but I think even rewards, okay, recognize karo or rewards do. Okay, it can be financial incentives, it can be non-financial incentives, या award system रखो, certificate system रखो, employee of the month रखो, employee of the year रखो, something like this which will encourage the employees, because मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज इज वेरी डिफिकल्ट. हाँ, तो अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो ही एम्प्लॉयज मोटिवेट होने वाले हैं. एंड मोटिवेटेड स्टाफ कैन ब्रिंग यू टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. रिमेंबर वन थिंग, if your employees are motivated, then only they will bring quality. If your employees are not motivated, they will just come work and go. There are two types of employees. एक वो जो अपना contribution देते हैं and प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन देते हैं, और एक वो एम्प्लॉय होते हैं जो आकर बस घड़ी देखते हैं कि शाम का कब 6 बजे और मैं निकलूं. ओके, सो दोस काइंड ऑफ एम्प्लॉयज आर नॉट एट ऑल यूजफुल टू मी. तो वो बोलो कौन से एम्प्लॉयज है पता है जो आकर घड़ी देखते हैं? दोज आर नॉट मोटिवेटेड. ओके, उनके पास कोई मोटिवेशन फैक्टर नहीं है जॉब प्लेस पे. ओके, सो देयरफॉर दोज एम्प्लॉयज विल नॉट ब्रिंग टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. तो अगर मुझे मेरे एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना है, आई नीड टू ब्रिंग समथिंग कॉल्ड रिकग्निशंस and a reward system which will help me to eventually bring total quality management. I hope there is no doubt in the answer, students. No doubt, ma'am. Very simple, no? Very No, ma'am. simple answer. I Yes, think. ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. All right. Let me just mark the attendance first. My goodness. Okay, you will tell me your roll numbers and very quickly I mark the attendance. 12. 23. 12. 29. All right. 20. 4. Okay. 12, ma'am. 4 1 5, and ma'am. 12, 11, ma'am. 15, Roll number 11, 22. Okay. And Roll number 3. roll number 9. number, roll number 9. And Ma'am 6. Krishna, out Roll of number Navaran Zulu. 16. Out of Navaran Zulu. done. Sorry, anybody else? That's it. Roll number 5. Okay. Ruman is present, no? Yes, ma'am. Present Ruman.
Okay, I have already marked him also present. All right, students, on that note, I think I stop here. In the next lecture, we will begin with benefits of or importance of total quality management. Okay, before Okay, I ma'am. end the session, students, okay, let me just tell you. So far, we have completed meaning of total quality management, important prerequisites, या फिर 6 C's of total quality management. We have also discussed the principles. Okay, तो ये वाला आंसर बहुत सिंपल होगा. Importance of TQM, it's going to be very simple. And after this, students, I'm planning to start with a very important answer. Important chapter, which is Unit 4, recent business scenario. Okay, and the topic is SOHO. Okay, that is small office, home office. It's very interesting concept. And we have outsourcing, networking, franchising, freelancing, self-financing, and startup. Okay, so there are total 7 new recent business scenarios that we are going to study. I request all of you to please improve your attendance so that I can work on BIFR, one of the important chapter that we have not yet discussed. Okay, 16-17 students attending the session would not work out. आप लोग total number of students कितने हो class में? 32. 32, na? 32. Okay, please tell your other classmates also to be present, okay, so that we begin with the new chapter and new answers. अभी तक जितना उनका miss out हुआ है, already the recorded sessions are uploaded on Google Classroom. Okay, they can refer it from there. However, I think live lectures का एक अलग important, live आप जितना सीखते हो उसका एक अलग importance है. Okay, and वो ज़्यादा useful होगा. So please tell your classmates to attend the session. Manoj, please talk to your friends, because we have to Yes, ma'am. discuss Yes, ma'am. BI. The day when I get 25 up attendance, I will discuss BIFR. Very important question from examination point of view also, and otherwise also. Okay, it's a very important question. I think we still have time. We can take 1 or 2 points from benefits of TQM. Okay, so that we can next lecture में ये answer हो जाए. Point number 1 is strengthens the competitive position of the firm. Okay, need not read the point. Let me just explain you. अगर आप क्वालिटी में वर्क करोगे, नेचुरली आपको कंपटीशन में एडवांटेज होगा. करेक्ट ना? फॉर एग्जाम्पल, मेरी फर्म है और मनोज की फर्म है. ओके, एंड आई बिलीव इन क्वालिटी एंड आई एम फॉलोइंग टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. किसके पास ज्यादा बेनिफिट होगा, मेरे फर्म के पास में या मनोज के फर्म के पास में? कम ऑन. If I am believing in quality and if there is total quality management in my firm, तो मेरे फर्म को एडवांटेज है या मनोज के फर्म को एडवांटेज है? Ma'am, it is the मेरे फर्म को ना, क्लियरली, क्योंकि मैं क्वालिटी में काम कर रही हूँ. एंड देन योर टेक्स्ट बुक इज सेइंग आज के डेट में कंपटीशन इतना कटथ्रोट है, and there are so many competitors in the market. अगर आपको survive करना है, forget about success, अगर आपको survive भी करना है, you should focus on quality. Then point number 2 in your textbook is saying leads to higher productivity and low cost of production. Students, when you start working on quality ना, इनिशियली आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहेगा, क्योंकि क्वालिटी लाने के लिए आपको ट्रेनिंग देना है ना, अच्छे रिसोर्सेस परचेस करने हैं, अच्छी मशीन्स लेनी होगी. बट दिस इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट. एक बार आप स्टार्ट करोगे क्वालिटी में काम करना, लेटर ऑन यू विल एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ओके, एंड हायर प्रोडक्टिविटी, मतलब आप कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाएंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना पाएंगे, बिकॉज आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर लिया है. So this is the next benefit, that it will help you to improve the productivity and reduce the cost of production. Point number 3 in your textbook is saying increase in market share and profitability. ऑटोमेटिक अभी ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि मेरे फर्म को एडवांटेज है, मैं कंपटीशन में आगे हूँ, ऑफ कोर्स मेरा मार्केट शेयर ज्यादा रहेगा, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा रहेगी. जिस फर्म के पास
ज्यादा मुनाफा है, ऑटोमेटिकली वो एक्सपांड कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, करेक्ट ना? सो दैट इज द बेनिफिट्स ऑफ total quality. I will be in a position to expand, I will be in a position to diversify. Point number 4 is saying processed are eased out and simplified. मतलब जब आप क्वालिटी में काम करना स्टार्ट करोगे, आप एक प्रोसेस डिजाइन कर लेते हो जो कि सिंप्लीफाई हो जाता है, लोगों को समझ में आ जाता है कि रूटीन उन्हें कैसे स्टार्ट करना है, हाउ दे हैव टू वर्क एंड हाउ दे हैव टू ब्रिंग द आउटकम. सो दिस इज हाउ you will benefit with the process being eased out and being simplified. I think I stop here for today and I continue in the next session. You all have a nice day ahead and I meet you soon. Till then, you take care of yourself. Bye bye. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Welcome.